बैठे बैठे आप। माननीय आपकी बात रिकॉर्ड पे जा रही। माननीय उपसभापति जी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने जो बात कही है वह सरासर झूठ और गलत है। कांग्रेस का इतिहास रहा है, चाहे वो कर्नाटक की विधानसभा रही, कर्नाटक के विधानसभा में ठेकेदारों को कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए 4% का रिजर्वेशन का प्रस्ताव पारित किया है। 4% का। ये अंबेडकर के रखवाले बनते हैं। उपसभापति जी, ये अंबेडकर के रखवाले बनते हैं। सरदार पटेल ने और अंबेडकर ने कहा कि रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन विल नॉट टेक प्लेस। धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं होगा। इन्होंने तेलंगाना की विधानसभा में पहले तो इन्होंने एससी का, एसटी का और ओबीसी का हक मार करके रिजर्वेशन मुस्लिम्स को, माइनॉरिटीज को देने का काम किया है। और इन्होंने बैकडोर एंट्री क्या की है? बैकडोर एंट्री ये की है कि माइनॉरिटीज को, मुस्लिम्स को स्पेसिफिकली ओबीसी में बैकडोर से एंट्री देने का भी काम, कुछ प्रयास इन्होंने किया। इतिहास इस बात का गवाह है। और अभी भी मेरे वक्तव्य के बाद डीके शिव कुमार ने फिर से कहा है कि संविधान कांग्रेस ने दिया है, संविधान को बदलने का काम भी कांग्रेस करेगी। देयर इज नो रिपेंटेंस। और बदलने का क्या काम है? बदलने का काम यह है, सरकारी नौकरी तो छोड़ो, अब ठेकेदारी में भी रिजर्वेशन होगा। ठेकेदारी में इनका दिमाग। प्लीज प्लीज आप बैठे, अपनी जगह बैठे प्लीज। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कांग्रेस सत्ता से बाहर रहकर इतनी छटपटा गई है, इतनी बौखला गई है कि ये अपना विवेक भी खो बैठे हैं। और इसलिए मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी इसके लिए जिम्मेवार है। यही मैं कहना चाहता हूं। थैंक यू। नाउ विल मूव। प्लीज मैं आग्रह करता हूं इस बिल पर आकर प्लीज प्लीज। आप ऑलरेडी बोल चुके। नहीं, ये आप मूव कर दीजिए बिल पर प्लीज। नो, द ऑयल फीड्स रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल 2024, द बिल वॉज पास बाय द राज्यसभा एट इट्स सिटिंग। ऑनरेबल मेंबर्स, प्लीज फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये बिल राज्यसभा पास कर चुकी है अपने सिटिंग में 3 दिसंबर 2024। प्लीज नो, नथिंग, नो, प्लीज टेक योर सीट प्लीज। द हाउस इज एडजर्न फॉर 15 minutes only. 15 minutes. Rajya Sabha adjourned for 15 minutes, but just before it was adjourned, we heard JP Nadda raise the issue of 4% reservation to Muslim contractors in Karnataka, and also spoke about DK Shivakumar's statement. We have Mohit on the broadcast. Now, this has escalated into a massive controversy. The issue has been raised in the parliament as well. DK Shivakumar has now, after this backlash, said that it was a casual comment. Well, yes, in fact, Swati, but the BJP is clearly saying that it's the Congress party that is wanting to change the constitution, and it was Rahul Gandhi before 2024 elections who went to the public having a copy of constitution in his hand, and Congress party made a narrative that the BJP is trying to change the constitution. If BJP gets 400 seats, they will change the constitution. But in fact, BJP says that this is the mentality of the Congress party, that they want to change the constitution. They are against the SC/STs. They are against the constitution. They are against B.R. Ambedkar because they are against the basic tenets of constitution, and they want to give the reservation based on the religious background, which is not permitted in the constitution, and hence they want to change it. And this all started with a statement coming in from DK Shivakumar. Now we see that how DK Shivakumar has come out with a statement. He has stated that the BJP is misquoting him. He also stated that he will take it legally, and he will also bring in privilege, and also he attacked JP Nadda, saying that I have more experience than him when it comes to the public life. So clearly we see massive war of words, massive
storm in the parliament. JP Nadda, BJP president, again raising this particular issue, saying that the Congress party talks about saving the constitution, saving the Ambedkar's constitution, but they have given 4%. They have given 4% reservation to the Muslims in the government contract. Well, let's play out those reactions of DK Shivakumar when he said it was a casual statement and also alleged that the BJP is misquoting him. I have not said that there will be any. I have said casually there will be so many changes after various judgments. Whatever reservation has been given as per the quota of the backward class has been given. I have not said that we are going to change the constitution or not that. I am a sensible senior politician than Mr. Nadda. I have not said that we are going to change the constitution or not that. Whatever they are quoting is wrong. They are miscarrying it. I am categorically telling that we are a national party. We know what is the constitution, how constitution is built. It is our party. We have brought the constitution to this country, and they are misguiding. I will take a breach of privilege on this. I will fight out a case. They are misquoting me. I have not quoted out anything on this. So DK Shivakumar says that he is being misquoted by the BJP and he will take legal action. First, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju mounted the attack in Rajya Sabha. He said such a statement by an individual holding a high constitutional post is unacceptable. Then Leader of House JP Nadda intensified the attack, taking a sarcastic jibe at the grand old party, asking, when Congress boasts of being protectors of the constitution, how can they implement quota based on religion, which is unconstitutional? Kharge hit back, saying that Samvidhan can never be changed. Witness the war of words. They are going to change the constitution of India to provide reservation in contract votes to a Muslim community. Now, this statement, we cannot take this statement lightly, because if it was a statement made by any ordinary person, then we can understand, we can reply outside. But since the statement has come from a person who is holding a constitutional position, extremely serious, it is a matter which we cannot tolerate, and this is assault on the Constitution of India. संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने स्पष्ट लिखा है और कहा है कि रिजर्वेशन धर्म के आधार पर नहीं होगा. दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर और ये लोग बड़े संविधान के रक्षक बनते हैं और ये लोग संविधान की रक्षा करने की बात सारे देश को बताते हैं, ढोल पीटते हैं, वो संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं. ये इसके लिए हम लोग संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया वो कोई बना नहीं सकता. रिजर्वेशन की कोई खत्म नहीं कर सकता और उसकी रक्षा के लिए हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने पूरा भारत जोड़ो यात्रा की. ये भारत तोड़ो करने वाले दिन है. ये सब रिजर्वेशन से धज्जियां उड़ाने वाले लोग. With that, we're slipping into a very short break. A lot more lined up on the other side.